do this 1 second. बस ठीक है, so let's start. Starting with अच्छा first question से start करते हैं. First question here. आवाज clear है? Yes. So starting with the first question. Okay, student wants to show the rate of the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid doubles every 10 degrees centigrade rise. तो वो कह रहे हैं कि the method the student uses to measure the volume of carbon dioxide released. उसने कहा the student has a Bunsen burner and a gas syringe. What other essential apparatus must the student use? तो calcium carbonate और hydrochloric acid का rate of reaction figure out करना है, which would produce calcium chloride plus water plus carbon dioxide, right? और उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लॉट करने एवरी जो भी उसके अंदर ना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसने कहा मेथड द स्टूडेंट यूजेस, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट से ना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मेजर कर रहा होगा, राइट? तो व्हाट एपरेटस वुड यू नीड? बैलेंस चाहिए? Yes. ठीक है, सो 1 सेकेंड, मैं एक से आवाज क्लियर कर लूँ ये. हाँ ठीक है. अच्छा, बैलेंस. व्हाई डू यू नीड अ बैलेंस? So to measure the mass. नहीं, लेकिन व्हाई डू यू नीड टू मेजर द मास ऑफ व्हाट? To measure the weight of calcium carbonate. ठीक है, चलो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट मेजर करना होगा. और क्या चाहिए होगा? Measuring cylinder. अच्छा, यू नीड मेजरिंग सिलेंडर. ठीक है, तो उससे वॉल्यूम ऑफ HCl आप फिगर आउट कर सकते हो, राइट? तो ये दोनों आप फिगर आउट कर सकते हो. तो बैलेंस, यू कैन ऑल्सो यूज अ ब्यूरेट, पेपेट, लेकिन इतनी ज्यादा चीजें तो नहीं चाहिए आपको. ब्यूरेट और पेपेट दोनों तो नहीं चाहिए. ओनली अ मेजरिंग सिलेंडर माइट बी सूटेबल इनफ. ठीक है. क्लॉक डेफिनेटली चाहिए. उससे अपार्ट फ्रॉम अ बंसन बर्नर गैस सिरिंज, क्लॉक हमेशा व्हेनेवर यू मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो यू वुड नीड टू टाइम इट, राइट? तो क्लॉक तो डेफिनेटली चाहिए, जिसकी वजह से ना फर्स्ट वाला तो वैसे ही गलत हो जाता है. एंड यू वुड नीड अ थर्मीटर, राइट? क्योंकि टेम्परेचर आप चेंज करोगे, वेरी करोगे, और देख लोगे हाउ फास्ट डज द कार्बन डाइऑक्साइड गेट प्रोड्यूस्ड, राइट? तो बी होगा. Yes. ठीक है. अच्छा, next one, which mixture can be separated into its component by adding water, stirring and filtering? अब इसमें you must know the solubility of calcium carbonate. Soluble है, insoluble है? Insoluble. Insoluble. ठीक है, तो that's a solid, और उसके साथ there's sodium chloride, which is obvious, NaCl, which is obviously soluble, right? Soluble. तो इसके अंदर ये वाला मेथड काम करेगा for separation? No. क्यों नहीं? देखो, जब आप ऐड करोगे वाटर, तो NaCl डिसॉल्व कर जाएगा, और वो जो आपका बीकर होगा ना, तो उसके अंदर NaCl जो होगा that would become aqueous, it would dissolve, और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चौक है या लाइमस्टोन है, मार्बल, that would settle at the bottom, right? क्योंकि it's not going to dissolve. तो when you filter it out, तो कौन सा filter out हो जाएगा, right? ये filter out हो जाएगा, तो ये काम करेगा. क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है. ये बहुत दफा आता है, this comes very frequently. Just remember कि adding water, stirring and filtering is used
I mean, filtration is normally used when you want to separate something that's insoluble from something that is soluble. जो उसके थ्रू पास कर जाएगा, something that will not pass. ठीक है, so इन दोनों में मसला है कि they're both insoluble. इसमें मसला है कि they're both soluble. तो filtration काम नहीं करेगा, और ये भी दोनों, both of them are soluble, right? अच्छा, next one, which row gives the correct test to identify both ammonia and sulfur dioxide? तो क्या टेस्ट होता है अमोनिया का? It turns red litmus blue. ठीक है, बेसिक गैस है, रेड लिटमस तो सी और डी में से होगा. एंड व्हाट्स द टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड? Acidified potassium. Acidified potassium manganate. ठीक है, सो रिमेंबर कि SO2 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट. तो वैसे तो टेस्ट है जो कि याद रखना है, लेकिन देयर टू इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, वन इज KI एंड SiO2. तो SiO2 का जो टेस्ट गिवन है ना, जो कि याद रखना है, वो है कि पोटेशियम मैग्नेट या किसी ऑक्साइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 के साथ रिएक्ट कर लो. तो मैग्नेट किस में कलर चेंज करेगा? From purple to Purple to colorless. colorless. ठीक है, एग्जैक्टली. और डाइक्रोमेट 6 जो है वो क्या होगा, अगर डाइक्रोमेट 6 भी यूज कर सकते हैं? Orange to green. ठीक है, it would turn orange to green. I said next is you've got two gases, ammonia and hydrogen chloride, at an equal pressure are allowed to enter the apparatus. तो HCl इधर से आ रहा है, NH3 is coming from this side, और वो कह रहा है कि white solid जो है ये बड़ा बार बार क्वेश्चन आता है. After a time a white solid forms on the inside of the tube. Which statement explains why a white solid forms in the position shown? यहाँ पे क्यों बन रहा है? Ammonia and hydrogen chloride react to form solid ammonium chloride. Is that correct? No. Yes. It is correct, क्योंकि अमोनिया जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, it always forms an ammonium salt, which would be NH4Cl in this case. ठीक है, और ये वही white solid है, which is NH4Cl that's forming over here. तो फर्स्ट वन तो है उसकी एक्सप्लेनेशन. अच्छा, फिर वो है कि ये इस साइड पे क्यों बना है? अमोनिया डिफ्यूजेस फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड. इज दैट द रीजन? Yes. ठीक है, और क्यों अमोनिया डिफ्यूज करता है फास्टर कंपेयर टू HCl? It has lower relative molecular mass. ठीक है, तो it has a smaller size, smaller mass. Ammonia has a lower relative molecular mass than HCl. ये भी मतलब correct है. So all three are correct explanation. Yes. नहीं, अच्छा, इसमें which statement explains why a white solid forms in the position shown? तो ये पहली वाली तो white solid की explanation होगी. इसको ऐसे कंफर्म कर लेना कि क्योंकि उसने दो बातें लिखी हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि white solid forms in the position shown ना. तो जो फर्स्ट वन है वो पोजीशन के बारे में तो नहीं बता रहा, लेकिन वो ये बता रहा है कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाइट सॉलिड क्यों फॉर्म हो रहा है. तो इसको ना एक दफा कंफर्म कर लेना. ठीक है, कि इसका मेरे ख्याल से तो तीनों ठीक है, लेकिन अब वो इसको कलेक्टिवली कह रहा है क्योंकि स्टेटमेंट जो है ना, दो स्टेटमेंट्स हैं, व्हाइट सॉलिड फॉर्म्स इन द पोजीशन शोन. तो ये दो जो है ना, ये पोजीशन को जस्टिफाई करेंगे, पोजीशन कहाँ पे, और ये पहली वाली जो स्टेटमेंट है ना, वो व्हाइट सॉलिड की बात कर रही है कि व्हाई डज इट फॉर्म. अच्छा, anyways, next one is the atomic number of cerium is 58. Se4 plus has 140 nucleons. How many protons, neutrons, electrons are there in one Ce4 plus ion? तो पहले तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? 58. 58. ठीक है, तो प्रोटॉन्स इन दोनों में से कोई होगा. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 प्लस है. Electrons 54. ठीक है, दैट वुड बी 54. तो बस फिर ए ही होगा आंसर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स in three solids X, Y, and Z. The three solids are krypton, potassium, and sodium chloride. तो इनमें से बताओ कि krypton, potassium, and sodium chloride. Which one is sodium chloride? Sir, X. ठीक है. अच्छा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. इनमें से पोटेशियम कौन सा है? Y. ठीक है, ठीक है, वो मेटल है, तो पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. और फिर लास्ट रह गया वो आपके पास क्रिप्टॉन ही है. दैट्स गोइंग टू बी
ठीक है, that's going to be this one. तो इसका जो भी बनता है, I think it's going to be D. अच्छा, next is which statement about calcium chloride is correct? Calcium chloride, is it, पहले तो बताओ कौन से टाइप का ये solid होगा? Calcium group 2 में, and Cl is in group 7. So is it, it's what? Ionic, covalent, metallic? Ionic. ठीक है, Ionic. it's going to be ionic. Calcium is 2 plus and Cl is -1. Metal, non-metal. ठीक है. So would it and remember it's a solid. Will it conduct electricity? No. ठीक है. So that's not going to happen क्योंकि solid state में ionic compounds नहीं करते because the ions cannot move around. They're stuck in their place. उसके अंदर करेंगे molten या aqueous. As the next one, it has low melting points. No. अच्छा, melting points are usually high. और ionic के remember कि कुछ ionic compounds होते हैं उनके melting points are extremely high, जिसके अंदर MgO and Al2O3, remember that कि they have extremely high melting points. तो ये furnaces वगैरह के अंदर और high power transmission और extreme conditions के लिए बने होते हैं. अच्छा, it has an ionic lattice structure, that's obviously correct. ठीक है. Next one is ethane and ammonia are covalent compounds. The dotted cross diagrams of these compounds are shown. Which statements are correct? So I'm assuming these two are correct. A molecule of ethane contains twice as many hydrogen atoms as a molecule of ammonia. So it's obvious. True. ठीक है. Unreacted nitrogen atom has 5 outer electrons. True. True. It's in group 5. It has 5 outer electrons. In a molecule of ethane, the bond between carbon atoms is formed by sharing 2 electrons, one from each carbon atom. The bond between Wrong. True. bond between carbon atoms. ठीक है? True. ठीक है. ठीक है. So that is true as well. So 1, 2, and 3 are all correct. Pira, which statement about the structure of bonding of metals is bonding of metals? ठीक है, is correct. Metals में क्या होता है? Metals, they like to lose electrons, so they all end up losing electrons, and the electrons are just roaming around. ठीक है, so they're mobile electrons. A lattice of positive metal ions. A metal lattice consists of atoms in a sea of electrons. Is that correct? Well, there is a sea of electrons, right? Yes. So, बस ये कि it consists of atoms in a sea of electrons. It would have been better कि अगर ना यहाँ पे ions होते. It's metal ions in a sea of electrons. But anyways, इसको हम रख लेते हैं. इसको पहले बाकी देख लेते हैं कि बाकी गलत है कि नहीं है. Electrons in a metal move randomly through the lattice. Is that correct? No. Yes. Electrons, free mobile electrons होते हैं ना. So I think unless there's electricity flowing, unless there is, अगर आपने उसको wire के, the electrons are freely randomly moving around. Unless you attach a metallic wire to a battery, ठीक है? So I think they do move randomly, unless they are connected to some power source. Metals are malleable because the particles present are mobile. No. ठीक है? I mean, the particles, खास तौर पे the ions are not mobile, ठीक है? But when you hammer it, they can sort of slip and slide. So they're not mobile, but you can sort of push them around. तो C तो definitely गलत है. The ions in a metal above move when positive and negative electrodes are attached. तो जब इसको power source के साथ connect करोगे, the ions, they'll never move. It's always the electrons that are moving around, that are mobile. तो ये भी definitely, मतलब आखिरी दो statements में वो definitely wrong है. ठीक है? इस वाली statement के अंदर issue है कि the metal consists of atoms in a sea of electrons, जिसमें atoms वाली बात जो है ना, that's probably wrong. The only thing that looks completely right is this one. Electrons in a metal move randomly through the lattice because they're mobile electrons. Is that clear? Yes.
As a next is when one volume of gas R reacts with exactly 5 volumes of oxygen, it forms carbon dioxide and water only. What is R? अच्छा, remember this मोल्स का क्वेश्चन है gases के अंदर वॉल्यूम रेशियो और मोल्स रेशियो इज एग्जैक्टली द सेम. तो वो कह रहे कि when he says कि one volume of gas R reacts with 5 volumes of oxygen, इसका मतलब है कि there's one R reacting with 5 oxygen molecules. Always remember this कि in case of gases, mole ratio and volume ratio is exactly the same. तो और उससे क्या है कि वो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन. बारी बारी यू हैव टू चेक दिस आउट कि C4H10 है, तो इसको अगर आप O2 के साथ बर्न करोगे यू वुड हैव टू मेक अ बैलेंस इक्वेशन. तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वुड बी फॉर्म्ड. यू गोइंग टू बैलेंस दिस, तो 4 कार्बन्स हैं, तो यू गोइंग टू हैव 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. 10H हैं, तो there would be 5 water molecules. Oxygens count कर लो तो there would be 8 and there would be 5 over here, so that would be 13. तो इधर कितना होना चाहिए? 6.5. तो एनीवेज हमारे पास ना वो रेशो नहीं आया. इट हैज टू बी कि वन मॉलिक्यूल मस्ट रिएक्ट विद 5O2. तो इस तरह बारी बारी यू वुड हैव टू सॉल्व फॉर दिस. तो इसका जरा मुझे बताओ ना कि क्या आता है. Make balanced equations and tell me which one is going to give me the exact ratio. इसका ट्राई कर लो, प्रोपेन का ट्राई कर लो. Sir, D is correct. कौन सा? D? Yes. C3H8 है. You've got O2 and they're reacting together. They're going to produce carbon dioxide and H2O. Or there would be 3 carbon dioxides and there could be 4 H2Os. तो oxygens total करोगे there would be 6 and 4 over here, that's 10. तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है. So that's 1:5. But the important thing about this question is remember this, that volume ratio and mole ratio are exactly the same, but only for gases. अगर दो gases है ना, तो उनमें mole ratio and volume ratio is always the same. For example, if you have an equation where N2 reacts with 3H2 and it forms 2NH3, right? So if you have 200 cm cube of N2 gas, so mole ratio and volume ratio is always exactly the same. So H2 gas would be according to the ratio 600 cm cube that's going to react. And the amount of NH3 that would be produced would be 400 cm cube. So mole ratio and volume ratio for gases is the same. As the next one, you've got there's a relative molecular mass of a compound is 166. So okay, what is the formula of the compound? अब इसके अंदर you would have to find out yourself कि 166 कौन आ रहा है. Can you try and do this quickly? Carbon is 12, hydrogen is 1, O is 16. Periodic table में remember कि it's the bigger number that's the atomic mass. So what are we getting? Sir, D is correct. D के 12 into 8 plus 16 times 1 plus 16, नहीं sorry 16 times 1 क्यों किया? 6 times 1. अच्छा, 6 times 1 plus 16 times 4. ठीक है, ये check कर लो कि is this the right value or not. 166. अच्छा, next one. Okay, a mass of 63 grams potassium magnate is needed for the complete oxidation of 23 grams of ethanol under acidic conditions. How many moles of ethanol can be completely oxidized by 1 mole of potassium magnate under these conditions? तो उसने mass दोनों की दी हुई. उसने कहा है कि there's ethanol, ठीक है, कितनी mass है उसकी? 23 grams है. And there's KMnO4. These two are reacting together. इसकी mass कितनी है? 63 grams है.
तो अब वो पूछ रहे हैं, the question is asking is कि how much ethanol, how many moles of ethanol can be completely oxidized by 1 mole of potassium magnate 7. पहले तो इनके मोल्स निकालो कि रेशो क्या है इनका, मोल्स का रेशो क्या है. तो डिवाइड, मोल्स इज मास डिवाइड बाय mr. So what's the mr of ethanol? राफे क्या आ रहा है एथेनॉल की mr? Sir, it is 46. अच्छा 46, so that means it's 0.05 moles? 0.5 moles. Yes, sir. अच्छा, what's the mr of इसके moles निकालो, what's the mr of KMNO4? That would be 39. Mn का मुझे नहीं idea, we can 55 56 होगा. So we can open the pure table, just one second. अच्छा, Mn is 55. ठीक है, so Mn is 55. Plus you've got 16 times 4, that's oxygen. So what do you get? How many moles do you get? 158. नहीं, moles कितना है? 158, तो mr आ गई है. It will be 0.398. Confirm is 0.398 moles. Yes. अच्छा, okay, this is the ratio, mole ratio. And what you now have to do is you need to figure out कि 1 mole of potassium magnate 7 अगर हो तो रेशियो आपके पास आ रहा है 0.5 versus 0.398. तो if you have 1 mole, तो इधर कितने होंगे? x moles, cross multiply, figure out what would you get. It would be, x would come out to be, I think, 0.5 divided by 0.398, right? Which should give me 1.25. Yes, 1.253. ठीक है, 1.25. That's the closest answer that we're going to get. अच्छा, फिर next one. कि diagram shows electrolysis experiment using electrodes. तो यहाँ पे there's electrolysis happening और यहाँ पे there are gases being formed. तो बारी बारी सारों का करना पड़ेगा कि what's going to happen? अच्छा, what's going to happen when electrolysis happens, right? First one, copper sulfate aqueous है, तो कौन कौन से आयंस होंगे? पहले तो solution में कौन कौन से आयंस होंगे? Cu2 plus and H plus and SO4 minus. अच्छा, this one is the cathode, right? Cu2 plus, H plus 1, SO4 2 minus, and OH minus 1, right? So which ones are going to get discharged at cathode? Who's going to gain electrons? Copper. Copper. ठीक है, so it's going to be copper 2 plus plus 2 electrons forming Cu. तो ये वैसे ही निकल गया क्योंकि गैस बननी चाहिए थी. वी आर गेटिंग अ पिंक मेटालिक डिपॉजिट ओवर हियर व्हिच इज डेफिनेटली नॉट, लेकिन हम वैसे प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं. इस साइड पे कौन सा डिस्चार्ज होगा? OH or SO4? Hydroxide. Wait. अच्छा, and OH. what's the equation? 4OH negative give us 2H2O plus O2 plus 4E negative. ठीक है, प्लस O2 प्लस 4E. अच्छा, एनीवेज, तो ये एक साइड पे वी आर गेटिंग ऑक्सीजन गैस, बट ऑन द वी नीड गैसेस ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते. ठीक है, अच्छा, सो कॉपर सल्फेट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. कॉन्सेंट्रेट सोडियम क्लोराइड. अब इसमें कौन से आयन होंगे सोडियम क्लोराइड के अंदर? यू गॉट कैथोड पे Na+1, एनोड पे there's going to be Cl-1, and there's going to be H+1, and there's going to be OH-1. Cathode पे बताओ which one will get discharged? H plus. Hydrogen. H positive. ठीक है, reactivity C में जो सबसे bottom पे it's diatomic, so it's going to gain 2 electrons to form H2 gas. ठीक है, so that's fine कि H2 gas बन रही है. और concentrated है तो उस साइड पे क्या होगा? Cl negative. ठीक है, so concentrated के केस में it's always Cl-1 that gets discharged. So that would be 2 Cl-1. वो भी diatomic, इसलिए 2 होंगे सारे और Cl2 बनेगा and 2 electrons would be lost. So both sides gases are being produced. So is this the correct answer? Yes. No.
ठीक है, इट्स नॉट क्यों नहीं करेक्ट, क्यों नहीं, मतलब गैसेस तो बन रही है, लेकिन व्हाई इज इट नॉट द करेक्ट आंसर? Sir, equal ratio में and they should be N2:1. हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना इस साइड पे ये दोनों, मतलब 2 electrons gained, 2 electrons lost, right? One molecule of H2 produced and one molecule of Cl2 produced, so equal amount of gas produce हो रही है, जबकि यहाँ पे the quantity of gas is left side पे ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए that's not going to work, ठीक है? So this is, इसको हटा दो, अगले पे आ जाओ। लास्ट वाला कर लेते हैं पहले, एथेनॉल, will it, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है? No. अच्छा, रिमेम्बर कि No. इलेक्ट्रोलिसिस उन चीजों का होता है जो कि मोल्टन या एक्वा स्टेट में आयंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है? सो या एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ionic compounds, when they're aqueous or molten, they would produce ions, plus acids would also do that. अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से आयंस होंगे? सल्फ्यूरिक एसिड में you're going to have H+1 and SO4-2, and you're going to have water से भी H+1 और OH ions, ठीक है? इस साइड पे तो खैर चॉइस ही कोई नहीं है, बैटरी इलेक्ट्रॉन H+1 को ही देगी, so it's going to become 2H+1 gaining 2 electrons forming H2 gas. दूसरी साइड पे क्या होगा? OH negative. अच्छा, so that's going to be 4OH-1 और वही इक्वेशन 2H2O plus O2. O2 plus 2 electrons, right? अब मुझे बताओ कि इधर भी तो गैस इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं? H2, उधर एक H2 बन रहा है, इधर एक O2 बन रहा है, सो गैसेस इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है या एक जगह पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है? एक जगह पे ज्यादा। और वो किस तरह पता लगा? ये खैर एक सेकंड, 4 इलेक्ट्रॉन्स था, ये वो किस तरह पता लगा कि एक जगह पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि रिमेम्बर कि Space. remember this, कि when electrolysis happens, the number of electrons that are being gained and the number of electrons, मतलब यहाँ पे electrons are being gained, right? Or either battery is pulling electrons away, so electrons are being lost at anode. The number of electrons gained and the number of electrons lost are always equal. So यहाँ पे how many electrons are being produced? Four electrons are being given to the battery, right? तो यहाँ पे the amount of electrons gained must also be equal. तो इसको 4 करना है तो इस पूरी equation को multiply करना पड़ेगा 4 से. So it would actually become 4H+1 plus 4 electrons, and that would make it 2H2. तो तब the amount of electrons gained and lost are equal, कि बैटरी 4 electrons इधर भेज रही है और इधर से 4 electrons वापस ले रही है. So now the amount of H2 is double the amount of O2 that's being produced. Is that clear? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अच्छा, so remember this. तो इसलिए C is the answer. Next one is, remember कि electrolysis के अंदर ना always make it a habit, do this, कि equation जब बन भी जाए ना, although कभी most of the time इसके marks नहीं होते, लेकिन जब बन भी जाए ना, make sure कि एक equation को ना किसी number से multiply कर दो, so that the number of electrons gained and the number of electrons lost, they're equal. So now this one, magnesium can be produced by the electrolysis of molten magnesium chloride. What are the products formed at the anode and at the cathode? तो ये तो आसान है कि you've got just two things, molten magnesium chloride. So there's just Mg2 plus and you've got Cl-1. तो Yes. so कौन cathode पे जाएगा? Magnesium. ठीक है, so it's going to be B. अच्छा, now extraction of aluminium from its ore. ठीक है, तो पहले तो 1 by 1 ना कि उसका स्टार्ट से ही कर लेते कि what's the ore known as? Cryolite. Bauxite. नहीं, क्रायोलाइट नहीं, बॉक्साइड होता है. Bauxite. And अच्छा, bauxite has aluminium oxide plus impurities. Can anyone tell me what the impurities are? Well, this is bauxite, right, with impurities. Fe2O3. ठीक है, Cryolite. Fe2, नहीं, क्रायोलाइट तो बहुत बाद में आता है. Impurities, this is bauxite. ठीक है, that's the first thing. ठीक है, Fe2O3 and other metal oxides are the impurities. और उसमें ये याद रखना कि the thing with aluminium oxide is that it's amphoteric.
ठीक है, which means के it can be dissolved in acids and bases, can react with both. ये जो other metal oxides है ना, like Fe2O3, they're mainly basic. Metal oxides are usually basic. तो पहला जो step 1 होता है इसके अंदर, बिफोर ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट, ये जो सामने बना हुआ है, इससे पहले एक स्टेप होता है विच इज प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, कि उसके अंदर ना ये बाकी जो मेटल ऑक्साइड्स, तो क्या करते हैं उसको हम किस में डिसॉल्व करते हैं? NaOH. ठीक है, यू डिसॉल्व बॉक्साइड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड NaOH विच इज अ बेस. तो NaOH में ना Al2O3 डिसॉल्व कर जाता है. तो Al2O3 डिसॉल्व्स, लेकिन NaOH is a base. Base doesn't react with other bases. So other metal oxides like Fe2O3. So other metal oxides like Fe2O3 are filtered off because they're not going to dissolve. तो ये पहला स्टेप होता है जिसके अंदर ना आप प्योर एलिमिना एक्सट्रैक्ट करते हो. ये Al2O3 को ना बॉक्साइड में से एक्सट्रैक्ट करते हो. इज दैट क्लियर? Yes. अच्छा, उसके बाद फिर होता है कि जब आपके पास प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है, ये अदर मेटल ऑक्साइड्स आर गॉन, फिर आप इसका ना वो इलेक्ट्रोलिसिस करते हो. तो मोल्टन स्टेट के अंदर टेम्परेचर क्या होता है इस पूरी चीज का? Sir, 950. ठीक है, 950 होता है. और वैसे 2000 होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बट क्रायोलाइट इज एडेड, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कम हो जाता है. क्रायोलाइट, and remember what's the formula of cryolite? It's Na3AlF6. Cryolite का काम ये कि it reduces economic cost because क्योंकि if aluminum oxide is not molten, no electrolysis would happen because the ions cannot move around. So cryolite reduces the melting point and helps in electricity conduction क्योंकि obviously it melts it, so it economic cost improve करता है. ठीक है. Now, you've got aluminium ions and you've got O minus 2 ions, right? Cathode पे कौन सा attract होगा? और इन दोनों में से Aluminium. Al cathode plus है? 3. अच्छा, cathode कौन सा है? Container or the rods that are dipped into it? Which one is the cathode? Container is the cathode, right? And this one is the anode. तो यहाँ पे aluminium plus 3 जो है ना वो जाता है, attract होता है. It gains 3 electrons from the cathode and it forms aluminium. तो L जो है that's definitely मतलब इन दोनों में से कोई होगा. अच्छा, J is the anode. J किस चीज का बना होता है? Positive Positive. electrode. ठीक है, that's the positive electrode, that's the anode. बना किस चीज का होता है? It's made out of graphite. Graphite. बस दोनों ही graphite के बने होते हैं. The container is also lined with graphite and the anode is also graphite. यहाँ पे कौन सा ion attract होता है? It's 2 oxygen minus 2 because it's diatomic. तो it would lose 2 electrons to form O2. तो oxygen gas produce होती है at the graphite anode. And the graphite anode starts burning with the oxygen gas क्योंकि वो graphite का बना होता है, carbon dioxide produce होना शुरू हो जाती है. So it eventually burns off. तो इसलिए the correct answer would be D, K. बीच में जो होगा ना K, that's aluminum oxide plus cryolite and that's the positive electrode and that's aluminium. ठीक है, clear है? Plus Yes. 3 प्रॉपर्टीज बताओ एल्यूमिनियम की जल्दी से कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द यूजेस. It contains electricity. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. It has low density. That's what तो is used to make aircrafts. ठीक है, And तीसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी? it has oxide layer. जैसे इट्स वेरी अनरिएक्टिव, तो वो रस्ट नहीं करता, डजंट रिएक्ट, इट्स वेरी अनरिएक्टिव. तो Food containers. हाँ, फूड कंटेनर्स, कैन्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स एक्सेट्रा, वो सारी चीजें उससे बन रही होती हैं बिकॉज यू नो इवन एट हाई टेम्परेचर्स वो जो ऑक्साइड लेयर है ना, इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनीथिंग. अच्छा, energetics. A reaction is exothermic. Which diagram shows the correct energy profile diagram for the reaction and the correct enthalpy change? Exothermic. Exothermic में products ऊपर होंगे नीचे होंगे? Products की ज्यादा एनर्जी होगी या कम एनर्जी होगी? ज़्यादा. नहीं, exothermic में एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, ठीक, काम.
तो प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी कम होगी क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी है. So it's either going to be C or it's going to be D, right? तो इन दोनों में से होगा. तो reaction pathway is shown. Which one is the correct one out of C and D? D. ठीक है, D is the correct one क्योंकि remember ये delta H का जो sign होता है, everything starts, जितने भी arrows होते हैं start at the reactants, and तो delta H is the overall energy change. तो arrow की जो direction होगी ना, ये जो delta H दिया हुआ है ना इसने जो C में दिया हुआ है, that is the delta H for the reverse reaction कि अगर आप यहाँ से वापस जा रहे हो, so that's the delta H for the reverse reaction. This one is the delta H for the forward reaction जब आप when you go from reactants to products. Activation energy is, again, you start at the reactants and you go all the way to the top. It's the energy that is needed at the start because right at the beginning, you need energy because you want to break bonds. And why is energy released in the second phase? Because new bonds are formed. So every reaction start you have to break the bonds. So which is why if the bonds are very strong, then there's going to be very high activation energy because unless you don't break the bonds, new bonds will not be able to form. So now, which fraction is used as a fuel in aircrafts? Paraffin. C. Paraffin. ठीक है, C. भाई भाई बताओ bitumen किसके लिए यूज होता है? Road Road surfaces. surface. अच्छा, naphtha. Naphtha gasoline साथ साथ होते हैं. Naphtha is feedstock in the chemical industry. Chemicals चाहिए होते हैं, different chemicals, क्योंकि मैंने बताया था कि organic chemistry is all about chemistry of carbon compounds, which is basically the chemistry of all living organisms. We are carbon compounds. So जितनी में वही medicines होती हैं, they're all made from compounds that contain carbon. They're derived from that. So naphtha is that thing. कि lab के अंदर if they're making medicine, they're going to use naphtha and they're going to turn it into different medicine molecules. So it's used as a feedstock in the chemical industry. Gasoline can obviously cars वगैरह में use होती है. Achha, which statement about this is photosynthesis? Which statement it has a negative enthalpy change? Is that correct? No. Is it achha, it is endothermic, right? Photosynthesis is Endothermic. in what form does it absorb energy? Like how does it absorb energy? How does photosynthesis happen? Like काफी obvious, it's sunlight. Sunlight. ठीक है, that is absorbed by your chlorophyll. अच्छा, so it's an endothermic. तो पहला तो गलत है. It is catalyzed by the presence of yeast. Wrong. वो तो ठीक है, yeast कौन से रिएक्शन में यूज होता है? Fermentation. ठीक है, that's used in fermentation. Product are oxygen and starch. Correct. नहीं, it's Oxygen glucose. Okay. ठीक है. Remember, this is the formula of glucose, not starch. ठीक है. अच्छा, वो भी पढ़ लेते हैं because this is condensation polymers का part है. There's a very little difference between starch and glucose. Glucose is the monomer. Glucose का जो molecule होता है ना, that's it's got OH on both sides, right? तो starch किस तरह बनती है? When lots and lots of glucose molecules they end up joining together. तो उनका जो H और OH है ना, वो बीच में से water बन के निकल जाता है और ये सारे आपस में लिंक अप होना शुरू हो जाते हैं. So there's one oxygen left in the middle. और फिर आगे H चला जाता है, OH यहाँ से चला जाता है. It just keeps on happening. So all the glucose molecules they eventually end up linking together. So starch is a complex carbohydrate. It's made when many glucose monomers they join up. Last सही है कि it occurs in green leaf. I mean that's very obvious कि photosynthesis happens in the presence of chlorophyll. You need chlorophyll. That's a green substance. It always happens in green leaves. As a compound X reacts with an acid to produce sulfur dioxide gas. A sample of X
is placed in a flask and acid is added, sulfur dioxide produced is collected, and its volume is measured at various times. तो कोई रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस हो रही है एज अ गैस, एंड ही इज मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ SO2. तो with respect to time, that's basically it's trying to measure the speed of the reaction. Start के sulfur dioxide बड़ी तेजी से produce हुई है, and then it slows down, and then the line flattens out. That means के the reaction has stopped. जितना ये steep graph होगा ना with respect to time, उतना fast reaction है. I said the gas can be collected by displacing water from a measuring cylinder. Is that possible? No. ये displacing water from a measuring cylinder, this is called gas collection over water, right? जिस तरह ये अच्छा gas collection over water. ये तरीका है, ठीक है? This is what he's talking about. अगे खुल जाए, ठीक है? So why can't you use this method for sulfur dioxide? Because it is soluble in water. ठीक है, remember sulfur dioxide is very soluble in water, or it dissolves in water to form an acid, which is sulfuric acid or sulfurous acid. ठीक है, so it's a very soluble gas. So you can't do that. That's not possible. The next one is the mass of the reaction flask and its content decreases as the reaction proceeds. So will the mass decrease? कि मतलब reaction Yes. चल, so Yes. it's obviously going to decrease because the sulfur dioxide gas is leaving. वो तो खैर आप कहीं और collect कर रहे हो, लेकिन it's obviously going to, the mass would decrease. The rate of the reaction increases, so that's the correct one. C वैसे कर लेते हैं कि the rate of reaction increases as time proceeds. It doesn't increase. पहले वो ज़्यादा steep था. Remember, steepness is that means the reaction was fast, right? और थोड़ी देर बाद the reaction has slowed down. ठीक है, it's becoming less steep. That means the reaction is slowing down. वो जब बिल्कुल flat हो जाता है, that means the reaction has stopped. The reaction is still proceeding after 8 minutes. It stopped somewhere around 5 minutes. 5 minutes के ऊपर ना line flat हो गई थी. That means the reaction was kind of, it was over. There was no more sulfur dioxide being produced. सही है? Yes. Yes, sir. अच्छा, which reactions involving oxidation reduction? तो पहले जल्दी से बताओ, oxidation क्या होता है? Loss of electrons, gain of electrons? Loss of electrons. अच्छा, loss of electrons. इसके अंदर जो charge होता है वो increase होता है, ठीक है? The oxidation state increases. Reduction में it reduces. So that's a gain of electrons. अच्छा, first one, chlorine gas reacting with potassium iodide. पहले तो okay, what's going to happen? Chlorine gas reacting with potassium iodide. More reactive displaces a less reactive. तो group 7 के अंदर मुझे बताओ कि which one is the more reactive, top one or bottom one? Top one. ठीक है, टॉप और मेटल्स में याद रखना, इट्स द बॉटम वन दैट्स मोर रिएक्टिव, ठीक है? और रीजन क्या होती है कि मेटल्स के अंदर जो बॉटम वाला होता है दैट्स बिगर इन साइज, तो इट्स इजी फॉर इट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन इतना दूर होता है उसके न्यूक्लियस से कि वो वैसे ही लूज कर जाता है. सो मेटल्स दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन यू आर रियली बिग. और नॉन मेटल्स में उल्टा होता है कि दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इफ यू आर स्मॉल. If the positive nucleus is surrounded by a lot of electrons, like 53 electrons in the case of iodine, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, मजीद इलेक्ट्रॉन गेन करना काफी मुश्किल होगा. So top one is the more reactive. So chlorine is going to displace iodine, and it would Yes. form KCl, and iodine will get displaced. So is this oxidation or reduction or both? और अगर ये redox reaction है, मतलब redox is the one where oxidation and reduction are both happening, तो which step, Yes. मतलब इसमें which thing is oxidation? Cl का चार्ज क्या है शुरू में? 0. ठीक है, it's neutral, और Cl का यहाँ पे क्या चार्ज है? -1. So that means क्या हुआ इसे? चार्ज, Reduction. हाँ, चार्ज रिड्यूस हुआ है, so that's reduction. और I पहले -1 था, and now it's 0. 0. Oxidation. So oxidation हुई है. So the first one is correct.
I said magnesium with hydrochloric acid. What's going to happen? Mg plus H2SO4. What would form? Metal plus acid would give you. Magnesium sulfate plus ठीक है. hydrogen. अच्छा, so it's going to give you MgSO4 plus H2 gas, right? तो ये सब है. अब is this a redox reaction? What's the charge on magnesium over here? 0. ठीक है, neutral element है, that's 0. Over here it's plus 2. Compounds can it's plus 2. So that is what? Oxidation or reduction? Oxidation. ठीक है, so that is oxidation. Or H was originally plus 1, but in H2SO4 it's plus 1, now it's 0. So that means it's getting reduced. So uska charge is getting reduced. So that is reduction. So it's going to be both things are happening. As usually both things would happen. Then finally, okay, what would happen when you have NaOH reacting with HCl? So you've got NaOH and it reacts with HCl and it produces what? NaCl plus H2O. अब इसमें बताओ कि what's happening? What's the charge on Na over here? It's plus 1. Plus 1. NaCl में it's also plus 1. H is plus 1, H2O it's still plus 1. O is minus 2, H is plus 1, Cl is minus 1. So the charges are not changing. So 3 is not a redox reaction. So it's only 1 and 2. ठीक है, clear है? Yes. So then you have equilibrium. When the reaction is at equilibrium, which statement is correct? So it's what's in equilibrium when the rate of forward reaction के जितनी speed से NO produce हो रहा है, at the same speed the reverse reaction is happening and the NO is breaking up to form N2 and O2. So the concentration of nitrogen present will change with time. Will it change when it's at equilibrium? Will the amount of NO at equilibrium increase or decrease, or will it stay constant? It will decrease. At equilibrium. Okay, हर second, let's say 20 molecules of NO every second are being produced, right? Again, the reverse reaction is also happening at the same speed. That means 20 molecules are breaking down again. So what's the net change? 0 है ना, मतलब the amount of NO would remain constant. Is that clear? Rafik, clear है? Yes, sir. ठीक है, so remember at equilibrium, the reaction is still going on. The NO is being produced. The forward reaction is happening. But at the same time, the backward reaction is also happening at exactly the same speed. So the net change remains kind of exactly the same. Is this clear? Yes. So it will not change. It's going to stay constant. I said the second one, the forward and backward reactions are taking place at the same rate. That is what the definition of equilibrium is. ठीक है, at equilibrium, the rate of forward reaction and the rate of backward reactions are equal. So Baki, the forward reaction releases energy. That's obviously incorrect because it's given as endothermic. There are more molecules on the left-hand side. They're equal molecules. There are 2 molecules and there are 2 molecules over here as well. So Baki galat hai. I said lead oxide reacts with nitric acid. So PbO reacting with nitric acid. ठीक है, HNO3. Also, it neutralizes the acid. Lead 2 oxide also reacts with aqueous sodium hydroxide, neutralizing the alkali. तो वो इसको भी react कर जाता है. And he's saying it's also reacting with NaOH. तो इसका क्या मतलब है कि which word best describes out of them? Amphoteric. ठीक है, it's amphoteric. It reacts with both. अच्छा, which pair of reagents are most suitable for the laboratory preparation of copper 2 chloride? Remember ये salt preparation का आ गया. पहले तो वो सारे reactions कर लेते हैं one by one. ठीक है, just a quick recap. You want to make copper chloride. बताओ कौन सा acid use करोगे? HCl. Hydrochloric acid. ठीक है, क्योंकि Cl आ रहा है तो it's obviously hydrochloric acid. Now acid के ना there are 3-4 reactions. You can either use metal plus acid and that should give you H2 gas. Is this reaction possible?
No. ठीक है, that's not possible because copper is very low in the reactivity series. And in the reactivity series, anything that's below hydrogen would not react with acids, right? So ये वाला reaction तो होगा ही नहीं. अच्छा, और क्या options है? You can react it with a base. Metal to get out of the question. You can't react a metal. So you can react a base. A base is either copper oxide, ठीक है? So copper oxide or copper hydroxide, that's a base. Metal oxide, metal hydroxide. So it's going to form salt and ये water produce करेगा, right? Or the third reaction is कि you can have HCl, मतलब copper chloride form करने HCl with a carbonate. Carbonate would be copper carbonate, and this time it's going to produce water and also carbon dioxide, right? तो तीन वैसे reactions होते हैं. Salt preparation का actually एक चौथा reaction भी होता है, लेकिन that's for ammonium salts. तो एक reaction metal वाला तुमने वैसे ही निकाल दिया बाहर, पीछे रह गए ये दो. अब ये दोनों से ना salt prepare हो जाएगी, और अच्छा दोनों से salt prepare हो जाएगी. Copper oxide is insoluble, HCl is aqueous, copper chloride is also aqueous, और H2O जो है ना वो liquid है, ठीक है. Copper carbonate जो होता है that's also a solid. Carbonates are insoluble. HCl is aqueous and copper chloride is also aqueous, or water liquid और CO2 gas है. Now मैंने क्या बताया था, तीन methods of preparation होते हैं. खैर इस केस में ना ये दोनों method दोनों reaction से काम चल जाएगा. तो it's going to be D. it's going to be D, ठीक है. अगर कॉपर कार्बोनेट होता तब भी ठीक होता, ठीक है. तो इट्स गोइंग टू बी डी. मुझे ये बताओ कि ये तो वो इक्वेशंस होगी ना, ठीक है. रिमेंबर देयर 3-4 इक्वेशंस. देयर यू कैन आइदर यूज मेटल प्लस एसिड, बल्कि सारी रिकैप कर लेते हैं. मेटल प्लस एसिड वुड ओनली वर्क फॉर दोज मेटल्स. कौन से मेटल्स के लिए काम करता है वो? Magic metals. मैजेट मेटल्स, ठीक है. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड टिन. क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में above magnesium the reactions become too violent that you can't really produce the salt in a laboratory, ठीक है, जो उसने mention किया हुआ है. And below hydrogen the metals become too unreactive that they hardly react with dilute acids. Concentrated के साथ they might react, like gold reacts with very concentrated acid but not with dilute acids. तो तब भी रिएक्शन करना मुश्किल हो जाएगा. तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में होता है ना, मेटल में, मैजेट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड टिन, these are the ones that can be used. फिर बेस प्लस एसिड है, यानी मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड. Then you've got carbonate plus acid that could be used as a reaction. और एक वो आखिरी है, that's for ammonium salt specifically. That's ammonia plus acid that leads to the formation of ammonium salts. अच्छा, ये तो 4 reactions हो गए salt preparation के. What we are interested in is कि जो हम further वैसे ही discuss करें, although question तुम्हारा खत्म हो चुका है, इस वाले पे. When you produce a soluble salt from an insoluble reactant, which method do you use? Titration, excess method और ionic precipitation. तीनों में से कौन सा method होगा? Ionic precipitation. Excess method, ठीक है. Remember that के ionic precipitation is used for making insoluble salts. Excess method is when you produce a soluble salt. यानी इन चारों में से ना कोई भी रिएक्शन आप लिखोगे ना, उसके अंदर the salt is soluble and the reactant that you're using is insoluble. So you're going to use excess method. For example, copper oxide. ये copper oxide और HCl वाला कर लेते हैं. आप क्या करोगे? You'll take HCl and you'll keep adding copper oxide to it. Copper oxide आपने add करना है excess में. The solid has to be added in excess. डाली जा रहे होगे just to ensure कि सारा का सारा HCl जो है ना वो react कर जाए. And all of the HCl gets converted into copper chloride plus water, etc. Right? So all the HCl will react. और वो जो insoluble copper oxide है ना, that can be removed easily by filtration. तो वो जो excess में copper oxide डाला है ना, that can be filtered off. So that is what excess method is. Copper carbonate होता है, that you would do the same. Keep adding copper carbonate until all the HCl has reacted. And once the HCl is gone and it has all changed into the salt and water and carbon dioxide, you can easily remove the solid reactant. So that is what excess method is. तो इस क्वेश्चन में ये excess method था. Although उसने method तो नहीं पूछा था, he was just looking for the reaction.
अच्छा, और वो मैं बता देता हूँ, वो भी क्विक रिवीजन कर लें कि आयनिक प्रेसिपिटेशन किसी ने कहा था। आयनिक प्रेसिपिटेशन कब यूज होती है? व्हेन यू मेक अ आयनिक प्रेसिपिटेशन का, insoluble. हाँ, इन रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। Ionic precipitation is used when you have an insoluble salt, like if you want to make copper carbonate, let's say. So how do you make copper carbonate? It's insoluble. You think of two substances, one containing copper, the other one containing carbonate, and the two substances must be soluble. Now, it could be Na2CO3, that could be a soluble, it could be any carbonate that's soluble. Ammonium carbonate, potassium carbonate. Lots of group 1 carbonates are soluble, lots of ammonium carbonates. You can even talk about acids like H2CO3. They are soluble as well. So, or copper का कोई compound. Think of any copper compound that's soluble. It could be copper sulfate, it could be copper nitrate, copper chloride. So you've got lots of copper compounds that are soluble. ठीक है? So for example, if I take copper nitrate, ठीक है, तो होगा क्या? Because these two are soluble, जब ये पानी में mix होते हैं, they dissociate. तो in the solution, when you mix the two compounds together, their ions, the copper ions and the nitrate ions would dissociate. वो सारे अलग अलग पानी के अंदर ना scattered होंगे. Sodium carbonate में sodium ions and carbonate ions would also dissociate and they would get scattered. और वो सारे ions ना पानी में mix हो जाएंगे. और फिर आहिस्ते आहिस्ते करके ना, what would happen is the copper ions and carbonate ions, they might combine together. And if they get together, they would form this insoluble copper carbonate, which would form a solid precipitate at the bottom. और पीछे solution में क्या रह जाएगा? It would be NaNO3. वो precipitate नहीं बनाते तो वो solution, क्योंकि they're very soluble, so they're going to remain part of the solution. ठीक है? Clear है? राफे clear है ये कि when you use excess? Yes, sir. और ये ionic precipitation है, ठीक है? Remember, ionic precipitation is used to form insoluble salts. And remember the method. उसका इन equation से कोई ताल्लुक नहीं है. ये जो equations है ना, ये equations, इन equations पे ना दो methods apply करते हैं. One is excess, the other one is titration. मतलब इनमें से कोई भी equation होगी ना, अगर all of them are aqueous, then you're going to use titration. ठीक है? Clear है? Yes, sir. मतलब अगर इन सारों में ना solid कोई भी ना होता, if this was aqueous, this was aqueous, this was also aqueous, then you would have used titration. Ionic precipitation जो है उसकी आपको equation अलग से बनानी पड़ती है, ठीक है? अच्छा, next is diagram shows 3 steps in the manufacture of sulfuric acid. So you've got basically contact process. मुझे बताओ कि step 1 क्या होता है contact process का, which is this one. Okay, sulfur is roasted in air to form SO2, ठीक है? अच्छा, उसके बाद that's an exothermic reaction that's burned, फिर SO2 को दोबारा O2 के साथ react करते हैं. That one is a reversible reaction. And it forms SO3, right? So it ends up forming SO3. अब इसमें क्या conditions होती हैं second reaction में? Vanadium pentoxide as Radium. catalyst. ठीक है, V2 of, अच्छा, so you're getting V2O5. One second. So V2O5 is the catalyst. What's the temperature? 450 degrees Celsius. 450. ठीक है, सी है, बिल्कुल सी है. और what's the pressure that's used? 1 to 2, 1 to 3 atmospheric pressure. ठीक है. अच्छा, those are the conditions that are used. फिर SO3 को ना किस में डिसॉल्व करते हैं? इस मतलब इसका तो 25 का तो सी आ गया वैसे आंसर. इसको concentrated H2SO4 के अंदर आप मिक्स करते हो, and remember concentrated H2SO4, you get oleum, which is then diluted. So H2S2O7, when you add water to it, and when that happens, so it forms 2 molecules of H2SO4. So that was step R. ठीक है, step Q ठीक है, बिल्कुल सही है. That's the next one. Indium is in group 3 of the periodic table. Antimony is in group 5. Which statement comparing indium and antimony is correct?
Antimony has more metallic characters. तो एक group 3 में, group 5 में, which one has more metallic character? Group 3 वाला या group 5? Group 3. तो ये तो गलत है कि antimony उसने कहा कि has more metallic character. नहीं, indium is going to have more metallic character. तो पहली दो A and B are automatically the ones that are incorrect. ये दोनों ठीक है. अच्छा, antimony has more valency electrons per atom. Is that correct? Yes. ठीक है, उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. ग्रुप 5 में, ग्रुप 5 has 5 valence electrons. उसके बाद है कि the positions of 4 elements are shown on the outline of the periodic table. Which element is a solid non-metal at RTP? Solid non-metal. कौन सा होगा? D. सॉलिड और डी, वो सिंपली जाके आप वहां पे देख भी लो. इनकी स्टेट्स पता होनी चाहिए. आयोडीन, रिमेंबर, इज आई थिंक इट वाज द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द टॉप, राइट? Yes. 1 2 3 4, हाँ ठीक है. सो इट इज आयोडीन. इनकी स्टेट्स पता होनी चाहिए. ग्रुप 7 की एटलीस्ट. हैलोजेंस, दे आर कॉल्ड हैलोजेंस. फ्लोरीन इज पेल येलो और कलरलेस ऑलमोस्ट. क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो. ब्रोमीन इज अ रेड ब्राउन लिक्विड. आयोडीन इज अ सॉलिड. और नीचे जाते रहते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता रहता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता रहता है. दीज टू आर गैसेस. ये लिक्विड है एंड दिस वन इज अ सॉलिड. सो रिमेंबर दिस एज वेल. तो इट्स गोइंग टू बी डी. आयोडीन इज अ ब्लू ब्लैक सॉलिड. और अगर वो वेपराइज करता है ना, इट्स अ पर्पल वेपर. अच्छा, 3 elements of each show oxidation states of +2 and +3. To which part of the periodic table do these variable oxidation states? कौन बनाता है? Transition. ठीक है. अच्छा, ब्रास इज एन एलॉय. पहले तो बताओ कि ब्रास में कौन से 2 एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं? Copper and zinc. ठीक है, सो इट हैज कॉपर प्लस जिंक. सो डज इट कंटेन अ sea of electrons? Yes. Yes. अच्छा, एलॉय और मेटल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एलॉय के अंदर जो आयंस के साइजेस होते हैं ना, वो थोड़े से, क्योंकि दे आर डिफरेंट मेटल्स, तो उनके जो साइजेस होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा सा haphazard होता है. Otherwise it's the same structure. Positive ions in a sea of free mobile electrons. So it's just an irregular metallic lattice. That's it. So it does have a sea of electrons. That is correct. It doesn't contain negative ions क्योंकि सारे metals हैं, तो they always form positive ions. Non-metals हैं ही नहीं इसमें. It is a compound. It's not a compound. It's actually a mixture of 2 or more metals. So remember, alloys are mixtures. अच्छा, which statement with this reaction is correct? मुझे तो पहले तो बताओ कि कार्बन को क्या हो रहा है. Is it getting oxidized or reduced? Oxidize. ठीक है, so gain of oxygen is oxidation. जिस चीज की oxidation होती है, what's the name given to that? Reducing agent. ठीक है, that's known as the reducing agent. ठीक है, नाम उल्टे होते हैं कि thing that gets oxidized, that's the reducing agent. So in this case, carbon is the reducing agent. That's it. अच्छा, ये फिर से क्यों क्वेश्चन आ गया? वैसे 2 दफा आ गया. अच्छा, you've got molten aluminum oxide, copper 2 oxide and lead 2 oxide and magnesium oxide are each electrolyzed in separate cells. Cells, एक second. अच्छा, ये cell है. This is the cell. अच्छा, each cell receives the same number of electrons. Which statement is correct? So now they are all molten. तो cathode के ऊपर हमेशा metal ही आएगा, ठीक है? Aluminium, copper, and lead and magnesium. So you've got aluminium, which is +3. You've got copper, +2 होता है, and you've got lead, which is also given as +2. And you've got magnesium, which is in group 2. So that's by default, it is +2. So which statement, each cell receives the same number of electrons. So all the metals can also be extracted from the oxide using coke. Is that correct? Wrong. इनमें से which of them cannot be reduced with carbon? Aluminium and magnesium. ठीक है, because they're more reactive than so carbon will not be able to reduce aluminum oxide, क्योंकि carbon will not be able to displace aluminium because it's in the reactivity series, it's lower down,
and the same goes for magnesium. So the first statement is definitely wrong. The anode and cathode should be made of the metal being extracted. Is it necessary? No. क्योंकि bauxite के अंदर they were not made from, they're made from graphite, so not necessarily. The pure metal is always produced at the cathode. True. Yes. ठीक है, but that makes sense. The same mass of each metal is formed, which is going to be wrong because obviously इनकी masses are different. If one aluminum atom is formed, so that's 27. One copper is formed, that's around 64, I think, 63.5. Lead is 207. So all atoms have different masses. Magnesium is 24. So अगर एक atom भी produce होगा ना, they're all going to have different masses. Is this clear? Yes. अगर उनको same number of electrons दो, कि इसको भी 2 electrons दे दो, इसको भी 2 electrons, इसको भी 2 electrons, इसको भी 2 electrons, and let's assume कि ऊपर से aluminium के तो moles भी कम बनेंगे क्योंकि it needs 3 electrons. But they all have different masses. So anyways, next one is iron is obtained in the blast furnace from the ore hematite. Which process takes place in the सारे process बताओ कि blast furnace है. First thing, क्या चीजें mix करोगे इस पे? Coke, CaCO3. oxygen, कौन सा? Coke, ठीक है, that's carbon. Hematite or acetate. SiO2. CSU. अच्छा, remember coke is carbon, hematite is Fe2O3 plus उसके अंदर कौन सी impurity होती है? SiO2. ठीक है, it has SiO2. First thing, heat किस तरह produce होती है? Carbon is roasted in air. Carbon reacts with oxygen to produce CO2. ठीक है, तो carbon burn मतलब coke वो जो coal है ना, that starts burning, ठीक है, and it starts forming carbon dioxide, which rises up and reacts with even more coke to produce carbon monoxide. And then this carbon and carbon monoxide both, they go and they reduce, because carbon is more reactive than Fe2O3, so they're going to reduce it to क्या बना देंगे, Fe or carbon dioxide, ठीक है, you can balance this. और इस तरह Fe produce होता है. What's the role of calcium carbonate? To remove impurities. Impurities. तो calcium carbonate पहले decompose होता है, it forms calcium oxide plus CO2. And then the metal oxide, which is calcium oxide, is basic. It reacts with acidic impurities like sand to form, what do you call this thing? Calcium silicate. ठीक है, calcium silicate, or also known as slag, which is low density, and it floats on top of the molten metal. It also protects the molten metal from being in contact with air, क्योंकि उसके ऊपर ना top पे there's a covering of slag. So you've got कौन सी statement correct होगी? A. अच्छा, coke is oxidized to carbon dioxide. Hematite is reduced by carbon monoxide. Hematite undergoes redox reaction, not a thermal decomposition. अच्छा, aircraft manufacture require metal that has a low density and is resistant to corrosion. तो कौन सी aluminium कौन सी properties को satisfy करता है? Both. So it satisfies both. 1 and 2. अच्छा, which pair of gases are both non-acidic? A. ठीक है, A. Ammonia is basic, और मीथेन जो है उसका तो कोई एसिड बेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है. So it's going to be A. Sir? Hmm. Sir, how do you know that some gas is acidic or non-acidic? उसमें एक लिस्ट है जो याद रखनी है ना, वो जो शीट नहीं दी हुई उसके अंदर, you've got non-metal oxides, right? They're mostly acidic, जिसमें you've got SO2, nitrogen के oxides, carbon dioxides, sulfur trioxide, phosphorus oxides, ठीक है. These are mostly क्योंकि they form phosphoric acid, nitric acid, nitrous acid, sulfuric acid, carbonic acid, they're all acidic, ठीक है. Clear enough है? इसमें there are two exceptions. जिसमें there's carbon monoxide and there's nitrogen monoxide, which are
न्यूट्रल गैसेस। ठीक है। Yes, sir. और बेसिक एक ही है बेसिक। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन जो आप लोगों को आएगा दैट्स ओनली वन, दैट्स अमोनिया। ठीक है। और इट्स बेसिकली एनीथिंग with with NH in it। जैसे एमाइंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दे आल्सो बेसिक, बट जस्ट रिमेंबर अमोनिया। क्लियर है ये? Yes, sir. और इसमें ना रिमेंबर दिस एज वेल कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी गैसेस है ना, they're all neutral gases except for carboxylic acids. All of the others are all neutral. So next is you've got seawater, and वो कह रहे is desalinated to make it drinkable. What is the main substance removed by desalination? Sodium chloride. ठीक है, sodium chloride. अच्छा, which diagram shows a branch chain isomer of butane? Butane में कितने कार्बन्स होते हैं 4. और क्या 4. होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे? Single one. अच्छा, सैचुरेटेड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स का मतलब है इट्स गोइंग टू बी सैचुरेटेड, इट्स एन अल्केन। तो इनमें से कौन सा आइसोमर है इसका? A. ठीक है, सो ए इज डेफिनेटली एन आइसोमर। रिमेंबर ये बी, सी एंड डी जो है ना, दे आर जस्ट ट्विस्टेड वर्जन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल के 4 कार्बन एटम्स लाइन में। इसके अंदर भी 4 कार्बन एटम्स जो है ना वो लाइन के अंदर ही है। ठीक है, इसके अंदर भी वो चारों कार्बन एटम्स, वो बस उसको बेंड किया हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द 4 कार्बन एटम्स आर स्टिल इन अ लाइन। ठीक है, तो दे जस्ट उसी चीज को ना बेंड करके ड्रॉ करने से इट्स नॉट एन आइसोमर। ठीक है, सो these are not isomers. It has to be a proper branch. Straight chain alkene undergoes addition reaction with bromine. What is the possible structure of the product? So it's an alkene straight chain, 4 carbon atoms, right? तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, सो दिस गोइंग टू बी H, ये सारे H हैं। What happens when bromine के साथ रिएक्शन होता है? What happens? The double bond turns into a Single. single, ठीक है, turns into a single bond, और कार्बन अपना फोर्थ बॉन्ड पे ना ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, इसके साथ भी ब्रोमीन आके इट्स गोइंग टू गेट अटैच्ड। सो दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो अब वो डबल बॉन्ड, दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड बीच में हो, या द अदर पॉसिबिलिटी इज दैट द डबल बॉन्ड इज राइट एट द साइड्स। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही होगा कि डबल बॉन्ड खत्म होगा, एक जगह पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, दूसरे के साथ भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। So these are the only 2 possible products. So what's wrong with the first one? अच्छा, रिमेंबर कि देखने में bromines are always going to be attached to adjacent carbon atoms. तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि the first bromine is attached to this carbon atom, फिर बीच वाले कार्बन आटम पे कोई ब्रोमीन नहीं है, फिर एंड वाले कार्बन आटम में there's a bromine, right? I mean, the first one is carbon with 3 H's, then you have carbon with H and Br, then you have a carbon with 2 H's, then you have carbon with H, 2 H's and Br. तो ब्रोमीन्स जो है ना वो एडजेसेंट कार्बन आटम्स पे होंगे, तो इसलिए दिस वन इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट वन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. सेकंड करेक्ट है Yes, it is. कि फर्स्ट कार्बन पे there's 3 H's, सेकंड कार्बन पे there's H and Br, थर्ड कार्बन पे there's H and Br, और फोर्थ कार्बन पे that's 3 H's। तो ये वाला है, फर्स्ट कार्बन there's 3 H's, दिस पे सेकंड पे there's H and Br, थर्ड पे there's H and Br, third वाले कार्बन पे there's 3 H's. So this is exactly this one. हाँ. See, that's exactly this one. Okay, 38. ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Alcohol. Alcohol. Carboxylic. Acid. Carboxylic. Carboxylic acid है, ठीक है, and it has 2 carboxylic acids.
but serial bond ONOH and serial bond ONOH. So there are two carboxylic acid functional groups. So say which alcohol is oxidized to form. Now remember any alcohol, where you have a carbon with an OH, और बाकी जो मर्जी हो, ठीक है. So alcohols, they get oxidized to carboxylic acids. तो जो carbon होगा ना, that turns into double bond ONOH. मतलब उसके जो H होते हैं ना, वो हट जाते हैं, and instead you get double bond ONOH. This happens when you react it with KMNO4 or K2Cr2O7. You oxidize alcohols. Air के अंदर भी alcohols oxidize हो जाते हैं, जिसकी वजह से you get, which is why you get vinegar. कि जब आप fermentation कर रहे हो ना, and you allow air to be present, then the alcohol turns into carboxylic acid, and that is what vinegar is. अच्छा, but anyways, ये वाला, तो if it has to turn into a carboxylic acid, it must be an alcohol first. So you've got two carbon atoms. This one must have been an alcohol, and the other one is also turning into a carboxylic acid, so that must have been an alcohol as well. So जो molecule होगा ना, that would be this one, कि आपके जो both carbon atoms है ना, this was an alcohol and this one was also an alcohol. जब oxidation में this one turned into a carboxylic acid, this one also turned into a carboxylic acid. Is this clear? Yes. Yes. So it's going to be C. Sir, why not D? D के अंदर same thing would happen. Let's oxidize D. So you're going to have 4 carbon atoms, right? So this carbon would turn into, after oxidation, it would turn into a carboxylic acid. So double bond ON, OH. And this carbon atom over here is an alcohol. It will also turn into a carboxylic acid. बाकी molecule को कुछ नहीं होगा. That would remain exactly the same. Rafi, is this clear? Yes, sir. So, I mean, you're getting something similar, but it's not the same molecule. उसके अंदर there were only 2 carbon atoms. ठीक है? Yes, sir. I said then the next one is some properties of compound J are, or obviously it's an organic compound. Which of them what reacts with carbonates to produce carbon dioxide gas? It is ethanoic acid. It has to be an acid. Acids have this property that they react with carbonates to produce salt, water, and carbon dioxide. So it's going to be it's going to be an acid, and the only option that you have is A. Ethanol के साथ it will produce a sweet-smelling liquid. What is that liquid called? Ester. That's an ester. We can draw that. Ethanoic acid is 2 carbon atoms, double bond ON, OH, and this would be H's. And it's going to react with ethanol. So the OH is gone, the H is gone as well. And they are going to combine to form an ester link. And the name of this ester is going to be what? Ethyl ethanoate. So this side is eth, this side is also eth, the alcohol side is ethyl, the double bond O side is OH, so that's ethyl ethanoate. As anyway, so that's not part of the question. It reacts with sodium hydroxide, so it is carboxylic acid. It's going to do that. Now the last one is what is this thing? It's what do you call this? What type of polymerization is this? Polyamide. This one is a condensation polymer. It's a polyamide. And how do you find the monomer back again? What are the monomers? What you can do is you can remove the connection, break the amide links, and you'll get this thing. There's going to be this molecule, which is CH2, 6,
and on this side you have NH, on this side you have NH. So there's going to be H that's going to be added, so it's going to be this molecule. Or ये वाला जो molecule that's going to be a dicarboxylic acid. It's going to be CH2 4 in the middle, and there's serial bond O, and there's serial bond O on this side. This side would be having OH and OH. So polyamides are formed between dicarboxylic acids and diamides. ठीक है, is this clear? Yes. चलो ठीक है. So this was question number 40. ठीक है. So let's Sir, yes. sir, I had a question. I sent you the question. Can you please check? Sir, I had a दिखाओ. question. I don't understand what this question says. नहीं WhatsApp पे. Sir, I sent you. Yeah, sir. नहीं मुझे नहीं समझ आया कहाँ पे सेंड किया. चैट पे. Yeah, sir, on WhatsApp. I'll send it to you again. ठीक है, एक सेकंड अभी भेज दो आप. Okay. अच्छा ठीक है, अभी आया. अच्छा, which substance does not react with hydrochloric acid? ये था ना. तो जी sir. अच्छा रिमेम्बर कि वो हमने यहाँ पे किया था कि वे कहाँ पे किया था कि एसिड्स के रिएक्शन सब में इधर ऊपर भी लिखे थे ना. सॉल्ट प्रिपरेशन के अंदर ना वी सेड कि एसिड्स, हाँ ये वाला, acids have 3-4 reactions. They react with metals, they react with base, they react with carbonates, and they react with ammonia. तो जिंक कार्बोनेट के साथ वो करेगा, ठीक है. जिंक हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसेस, तो उसके साथ भी करेगा. मेटल के साथ भी करेगा, जिंक मेटल के साथ, क्योंकि जिंक इज रिएक्टिव. मैजेट मेटल्स के अंदर वो आता है. जिंक नाइट्रेट के साथ नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? Yeah, sir. Okay. ठीक है. So they react with metals, they react with bases, they react with carbonates, but not with nitrates. तो इसलिए D is going to be the wrong one. One does not. ठीक है. I'm sure there's another one too. Can you please check that one too? ठीक है, just 1 second. The next one is कि इधर एक सेकंड में स्क्रीन पे ले आओ. कहाँ पे गया? अच्छा, so 1 second. So the next one is the table shows the energy released by the complete combustion of some compounds. Fuels, which fuel releases the least energy when 1 gram of the compound is completely burnt? अच्छा, पहले तो ये enthalpy change इसके ऊपर ही एक सेकंड में लिख लूँ. अच्छा, first thing is कि जो उसने enthalpy change दी है per mole दी हुई है ना. So let's pick this one. That means it's minus 2200 kilojoules, right? Per mole. यानी for how much? 1 mole. कि 1 mole burn करेगा ना, तो 1 mole propane burn करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी. Is that clear? Yeah. ठीक है. अच्छा, 1 mole की mass क्या होती है? 1 mole की जो mass होती है, that's the MR. मतलब moles मुझे पता है ना, तो हमने तो per Yes. gram निकाला है ना, तो I can convert the moles into mass. तो I know कि it's moles is equal to क्या होता है? Mass divided by MR, right? तो अगर मोल्स मेरे पास 1 है तो MR को इधर ले जाओ तो mass is MR, right? तो इसका मतलब है this is basically for how much? For 44 grams. क्योंकि that's the MR, right? तो per gram निकाल लो कि 44 grams इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो 1 gram कितनी करेगा, तो वो फिर सारों की कैलकुलेट करनी पड़ेगी. Is this clear? Yeah. कि 1 gram की फिगर आउट करनी है. अच्छा, तो फिर इसी तरह इसका भी करोगे कि 5510 kilojoules is being released by 114 grams, right? तो इसकी भी per gram निकालो कि 1 gram कितनी, इसको divide this by 114, यानी basically at the end of the day इसको divide करना है 44 के साथ, इसको divide करना है 114 के साथ, इसको divide करना है 100 के साथ, and this has to be divided by 78.
तो वो पर ग्राम निकल आएगा। Okay, sir. तो ये करना है। और कोई क्वेश्चन है? Okay, sir. Yes, sir. 20 भी है. अच्छा, जस्ट 1 सेकेंड। So it's not 20 वाला. The 20. The question number 20. ठीक है, 1 सेकेंड, ये मैं खोल लूँ। अच्छा, सो दिस वन, क्वेश्चन नंबर 20, Yeah. ये वाला, सॉरी। Okay. अच्छा, which change involves a reduction? तो first one is calcium carbonate to calcium oxide. That's देखना पड़ेगा, that's decomposition. Carbonates decompose to form calcium oxide plus they form carbon dioxide. So what's the charge on calcium over here? It's +2. What's the charge of calcium over here? That's also +2. Okay. So nothing is happening. It's still calcium +2. Oxygen is -2 everywhere. So oxygen is -2. Either be oxygen is -2. So everything pretty much is the same. As a copper to brass is not a reaction. Well, that's a mixture. So that's not a reaction. Ethene to अच्छा, उससे क्या है कि which change involves oxidation? D पे पहले चले जाते हैं. Sand to silicon. So you've got SaO2, sand, and it turns into silicon. So what is loss of oxygen? Loss of oxygen क्या होता है? No, sir. It's reduction. It is reduction, ठीक है. So यही वाला होगा, ठीक है. D. Clear है? Yes, sir. Thank you so much, sir. चलिए, ठीक है. चलिए, ठीक है. Let's continue tomorrow then, ठीक है. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.